Here, what we will do is we'll do an ultra fast product execution. So, जैसे कि suppose these are the list of the customers which are there, right? जो कि मुझे import करना है, तो मैंने इन सबको किया, खड़ा कर name or group name, I put it up here. Then I go here, then I do an import. No, and then I go here. Then I say sundry debtors 2.xls ledger here, combine opening balance, and then I accept, and then I import. And I say yes. Okay. The second one has also gone through, right? Then I go down here in order to import the vendors. So if vendors हैं तो then the vendors would be sundry creditors, right? 37 vendors. Go here. Yeah, yeah, paste. And here it will be sundry creditors, right? Correct? और खींच दो इसको नीचे. फिर इसको सेव करो क्योंकि मैं अलग अलग से ऑडिट से वो कर रहा हूँ ना कोचिंग पार्टी. इसमें आया सन्ड्री क्रेडिटर्स. Then I come down here, purchase, copy, paste, data, remove duplicates, 34 unique values. Company, paste, then sundry characters. Okay, so this is how it is going to be. And I save it. Import, masters. Sundry characters, ledger, accept. It's simple, right? 69. Okay. Alter. Fine. This is going perfectly fine. Okay, this goes through. Then the banks, right? They need the bank details, right? A B bank USD. Okay. USD. This is bank account. Pow HKD. Pow HKD. Bank accounts. DBS SB HKD.
CBS UBUSD बैंक अकाउंट्स, ठीक है बेटा। DBS CA HKD, DBS CA HKD, ये भी बैंक अकाउंट्स, ठीक है ना। ये आ गया तुम्हारा बैंक अकाउंट्स। सेव एज कोचिंग पार्टी बैंक अकाउंट्स, ठीक है। जय श्री राम। बस इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट मास्टर्स, यहाँ पर ले जाए, बैंक अकाउंट भी आ गया। हम्म, हेलो। हम्म, हाँ। नहीं ना, क्या बात है। ओके, एक सेकेंड इसको रोक देते हैं।